Okay, so today we are going to start with a new topic, new flowchart that says you need to write up a program that prints some of the positive values. User input 10 values. Now, what do you mean by that? They are saying that basically you need to find out the sum of the values that are positive. But the user can input 10 values. How many values can a user input? A user can input. Okay, a user can input 10 values, but the thing is that you need to basically determine out of those 10, how many out of those 10, how many are positive, and you need to print the sum of only those positive values. For an example, थोड़ा सा और इसको डिटेल में बता देता हूँ. आपने पहली वैल्यू यूजर ने इनपुट करी, फॉर एन एग्जाम्पल दैट इज -1. क्या -1 का सम निकलेगा? सर हम तो लास्ट क्लास में पासवर्ड्स वगैरह कर रहे थे, वो फायरवॉल वगैरह कर रहे थे ना. Just hold on. ओके, सो अब आपके पास 10 वैल्यूज इनपुट हो रही हैं. उन 10 में से फॉर एग्जांपल देयर आर 5 वैल्यूज जो आपके पास पॉजिटिव है, तो सम से उन्हीं पॉजिटिव वैल्यूज का निकालना है. लेकिन जो वैल्यू नेगेटिव एंटर हो रही है, सो द प्रोग्राम हैज बीन एग्जीक्यूटेड वंस. प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो गया, तो ऑब्वियसली काउंटर में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा. क्लियर विद दिस पॉइंट? ऐशमान समझ में आ गया बेटा? फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज के अंदर से the first value that have been entered 5, इसका सम निकलेगा. सेकंड वैल्यू have been entered -1, ये इसका सम निकलेगा -1 का? नहीं निकलेगा. ठीक है, अब जब इसका सम नहीं निकल रहा आपके पास, तो लूप तो एक बार चलिए आपके पास. लूप have been executed once, so that means कि काउंटर आपके पास ऐड हो गया. now the third value have been entered 3. अब तक का सम कितना हो जाएगा? 5 और 3 प्लस हो गया 8 हो जाएगा. 4, 12, now -2, -6, -7. इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी काउंटर चल गया है आपके पास. 10 वैल्यूज में से कितनी वैल्यूज हो गई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. 7 values have been entered. So first of all, you need to determine whether the input value is whether the input value is positive or negative. If it's positive, then you need to have the sum out of it. Clear? अब समझ में आ गया? Now give it an attempt. Come on. You will easily take around 15 to 20 minutes to solve this out. You guys can take the help from iteration question जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था. ठीक है, you guys may have a help from question number 2 and question number 5. इतना समझ आ गया कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इतना नहीं आया कि मैं क्वेश्चन पे ऊपर. Just give it an attempt over here. गलत बनाओ कोई इशू नहीं है, but give it an attempt. इवन और ऑड का साइन कैसे लगाना है? मतलब बड़ा बड़ा करके कैपिटल में लिखे कौन से मतलब इवन और ऑड तो लगाना ही नहीं है ना यहाँ पे.
यहाँ पे तो पॉजिटिव नेगेटिव, भाई नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं आपके पास? They are less than zero. So just if num less than zero, obviously it's a negative number. नो, ऐसा नहीं होगा ना, आपने 1 to 10 वैल्यूज क्यों इनपुट करनी है? वो तो बोल रहा है 10 वैल्यूज इनपुट करनी है, बेसिकली रैंडम वैल्यूज, इट कैन बी एनी ऑफ द वैल्यू। नहीं, एक ही नम के अंदर लूप चलेगा ना आपके पास। लाइक फॉर एग्जांपल, जस्ट हैव एन आइडिया ओवर है, यहाँ पे हमारे पास था, ठीक है। नाउ ओवर हियर इट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट नम, जब नम इनपुट कर लोगे तो नाउ इट विल बी चेकिंग आउट इफ काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 10। इफ इट्स यस तो दोबारा चलेगा और दोबारा इनपुट नम हो जाएगा, तो एक ही वेरिएबल नम कर लोगे आप। फाइन, समझ में आ गई वाली बात? एक ही वेरिएबल के अंदर बार बार वैल्यूज देता रहेगा। एग्जैक्टली। आउटपुट लिखना था, वो एक सिंटेक्स का इशू है। राइट नाउ व्हाट आई वांट टू सी, आई वांट टू सी द दैट वेदर यू गाइस आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट और नॉट। Abdurrahman, are you able to attempt it? Yes, sir. Okay, good.
Okay, now what you have sent to me, Abdurrahman, is something. You have taken sum initially 0, sum is initially 1. Oh, sorry, num is initially 1. Input numbers between 1 to 10. Now, how could you say that? Because the thing is that, can you hear me? Abdurrahman, are you able to hear me, beta? Abdurrahman, are you able to hear me now? I can hear you. So I can hear you. Okay, Abdurrahman, you just have made a flow chart, and in this flow chart, what you have done, you just said that you need to enter the values in between 1 to 10. How could you say that? Because you cannot say that. The reason behind it is because they are not bounding us to enter the values between 1 to 10. It can be any positive value or it can be any negative value. First mistake. Now, what is the reason that you have done num equals to num plus 2? Oh, that part I copied it from the interpret part, interpret example. It's wrong. You need to put up the conditions over here, basically the check conditions. So there are no check conditions now. Given a time once more. Okay, sir. So I have to make the values positive only, and they can be anything. They can be any positive or negative, and but you need to take the sum only of the positive values. Okay.